of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, to deliver the first remark. Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, para menteri dan anggota delegasi kedua pemerintahan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menyambut kembali Yang Mulia di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India. Kita memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang lama. Karena itu, kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral,
dan penguatan kerjasama antar lembaga, termasuk lembaga think tanks dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya, juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar di India. Kami yakin kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin sekalian, Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global.
Kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari Global South didengar. Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Indonesia sekarang yang keempat ya, keempat di dunia. Jadi kerjasama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan. Marilah kita terus melangkah bersama, membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. Next, we would like to invite the Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Sri Narendra Modi, to deliver his remarks. Your Excellency, राष्ट्रपति प्रभुओं, Yang Mulia दोनों देशों के Presiden डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, delegasi yang terhormat dari kedua Namaskar. negara, सलामत awak media सियां। yang kami hormati, selamat siang. सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए Pertama-tama, अपने मित्र saya ingin प्रेसिडेंट प्रभुओं को उनका हृदय से menyampaikan rasa आभार terima व्यक्त kasih yang करता tulus हूं। kepada sahabat saya Presiden Prabowo पिछले वर्ष atas sambutan yang भारत hangat. के गणतंत्र दिवस के tahun मुख्य lalu अतिथि के रूप में Kami हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला menyambut और आज Bapak Presiden sebagai उनके tamu आत्मीयता agung भरे निमंत्रण dalam पर perayaan Hari इंडोनेशिया Republik की dan यात्रा करते hari हुए ini मुझे बहुत खुशी हो saya रही है। merasa sangat senang आज berkunjung सुबह मुझे ke Indonesia atas बहुत undangan Bapak स्नेह Presiden. के साथ, Pagi tadi आदर के साथ dengan इंडोनेशिया penuh का rasa cinta dan kasih sayang dan सर्वोच्च rasa hormat सम्मान yang दिया besar, गया। ये सम्मान saya dianugerahi कोटि-कोटि anugerah tertinggi di भारतवासियों का है। Indonesia dan penghargaan tersebut इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। merupakan milik भारत और semua इंडोनेशिया orang के Indonesia, India ऐतिहासिक dan और आत्मीय संबंधों का है। berasal dari sentimen मैं प्रेसिडेंट positif antara प्रभुओं जी, kedua negara yang mencerminkan Indonesia की hubungan सरकार yang dekat dan bersejarah antara यहाँ की Indonesia dan जनता का India. हृदय से Saya आभार व्यक्त menyampaikan करता हूं। ucapan terima kasih tertinggi kepada Friends, Presiden Prabowo, pemerintah Indonesia, बीते वर्षों dan में masyarakat Indonesia. भारत और इंडोनेशिया के Teman-teman, संबंधों में dalam beberapa tahun terakhir, एक Indonesia नई dan ऊर्जा, India एक नया विश्वास menikmati और एक नई energi baru गहराई dalam आई। hubungan kedua negara dan rasa percaya diri 2018 yang में baru बनी हमारी dan kerjasama yang semakin mendalam. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप Kemitraan strategis komprehensif एक kita नई उड़ान ले रही है। disepakati tahun 2018. डेवलपमेंट, Saat ini Security, semakin meningkat टेक्नोलॉजी dan kita menempuh Culture, jalan-jalan और penting एजुकेशन हर dalam क्षेत्र peningkatan में kerjasama di महत्वपूर्ण pertahanan, कदम बढ़ा रहे pembangunan हैं। teknologi, budaya, मुझे dan विश्वास है juga pendidikan.
आज से Saya भारत yakin इंडोनेशिया bahwa साझेदारी का pertemuan hari ini एक akan menandai सुनहरा अध्याय शुरू permulaan होगा baru और इस सुनहरे bab अध्याय का बहुत emas बड़ा dalam kemitraan सकारात्मक Indonesia प्रभाव dan India 21वीं सदी yang की membawa दुनिया पर dampak होगा, positif पूरी dari bab मानवता kali पर ini होगा। akan terasa di seluruh dunia di abad हमारे देशों के ke-21 बीच बढ़ता dan विश्वास, bermanfaat bagi kemanusiaan secara हमारी keseluruhan. रक्षा, Teman-teman sekalian, सुरक्षा kepercayaan yang semakin tinggi और atas kedua मैरीटाइम negara सहयोग को semakin kuat tercermin मजबूत dalam कर रहा है। kerjasama keamanan dan pertahanan आज हमने serta kerjasama di डिफेंस bidang maritim. एक्सचेंज, Hari ini डिजास्टर मैनेजमेंट kami sepakat और इंडस्ट्रियल meningkatkan सहयोग बढ़ाने kerjasama पर सहमति बनाई। dalam pertukaran अब हम bidang दोनों pertahanan, देशों के manajemen bencana, कोस्ट गार्ड, dan kerjasama bidang हिंद industri महासागर में मैरीटाइम dan सेफ्टी juga और penjaga सिक्योरिटी के pantai लिए kedua negara akan bekerja मिलकर sama काम करेंगे। untuk memastikan keamanan दो maritim करीबी मैरीटाइम देश होने di के Samudra नाते Hindia. हमने ब्लू Sebagai dua negara इकोनॉमी, maritim yang पोर्ट berdekatan, डेवलपment, kami juga menyepakati untuk maritime meningkatkan trade kerjasama आपसी di सहयोग bidang बढ़ाने का ekonomi एक biru, निर्णय लिया है। pembangunan pelabuhan, फ्रेंड्स, dan भारत perdagangan और maritim. इंडोनेशिया के लिए Teman-teman, गरीबी को परास्त bagi करना India dan Indonesia और अपने नागरिकों तक menanggulangi कल्याणकारी kemiskinan योजनाओं का dan लाभ memastikan पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता bahwa है। program kesejahteraan हमने rakyat इंडोनेशिया mencapai के seluruh साथ masyarakat merupakan अपनी prioritas मिड डे tertinggi मील bersama. स्कीम Kami और पब्लिक kita डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के memiliki सॉल्यूशंस program makan साझा siang किए yang हैं। sama dan अब distribusi हम kepada publik इस सहयोग को di Indonesia. नेक्स्ट लेवल Dan पर लेकर sekarang जा kami रहे हैं। meningkatkan kerjasama हमारा tersebut हेल्थ कोऑपरेशन ke level yang lebih दोनों tinggi. देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस Kerjasama kita सुनिश्चित di करने bidang में kesehatan अहम योगदान देगा। akan berkontribusi आज penting हुए एग्रीमेंट से memastikan layanan भारत की kesehatan हाई berkualitas क्वालिटी di kedua negara और melalui किफायती kesepakatan yang दवाइयाँ ditandatangani hari ini. इंडोनेशिया के नागरिकों को Obat-obatan और berkualitas dan सहजता terjangkau से dari उपलब्ध India होगी। akan semakin tersedia bagi warga negara इंडोनेशिया के Indonesia. डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की Kami कैपेसिटी juga बिल्डिंग में akan भी berkontribusi योगदान देंगे। bagi peningkatan भारत kapasitas dokter dan tenaga डेवलप किए kesehatan गए di गेहूं Indonesia के बीज की सप्लाई dengan से mensuplai इंडोनेशिया की फूड wheat सिक्योरिटी seeds yang और dikembangkan di मजबूत होगी। India dan ketahanan हम pangan एक Indonesia दूसरे के juga साथ akan semakin kuat. सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो Kami juga टेक्नोलॉजी akan में membagikan praktik-praktik baik बेस्ट dari sustainable प्रैक्टिसेस farming भी dan साझा agroteknologi करेंगे। फ्रेंड, dengan satu sama lain. 21st सेंचुरी Teman-teman, टेक्नोलॉजी ड्रिवन abad सेंचुरी है। ke-21 भारत और इंडोनेशिया adalah abad yang didorong oleh दोनों ही teknologi. युवा Dan India dan ऊर्जा Indonesia, से भरे हुए kedua देश हैं। negara हमारे युवाओं में diberkahi oleh टेक्नोलॉजी के प्रति energi स्वाभाविक रुझान है। orang हमने muda अपने युवाओं के बीच dan AI, pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi डिजिटल dan पब्लिक kita telah इंफ्रास्ट्रक्चर menandatangani जैसे क्षेत्रों में kesepakatan penting dalam टेक्नोलॉजी meningkatkan सहयोग बढ़ाने के लिए आज kerjasama pemuda एक di अहम bidang एग्रीमेंट किया। AI, telekomunikasi, हम dan दोनों देशों infrastruktur के बीच infrastruktur स्टार्टअप digital. सहयोग को Dan और गहरा kita करने juga पर भी sepakat सहमत हुए untuk हैं। memperdalam हम kerjasama इंडोनेशिया में antara startup भारत के kedua negara. प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने Institut के Manajemen yang जा bergengsi रहे हैं। di India, इससे Bangalore, पूरे akan आसियान membuka क्षेत्र के kampus युवाओं को di Indonesia tidak बहुत lama लाभ lagi. होगा। Dan inisiatif स्पेस सेक्टर tersebut में भी akan membawa हमारे बीच manfaat besar bagi दशकों masyarakat muda di पुराना kawasan ASEAN dan di विश्वसनीय sektor सहयोग kerjasama रहा। space atau angkasa. इसे आगे बढ़ाते हुए आज Kita sudah स्पेस memiliki सेक्टर में kerjasama yang ज्वाइंट berjalan रिसर्च bertahun-tahun. टेक्नोलॉजी Dan untuk शेयरिंग kedepannya, और kita telah कैपेसिटी mengambil बिल्डिंग से keputusan जुड़े penting untuk अहम melakukan riset निर्णय लिए bersama गए हैं। di sektor Friend, angkasa atau space आज के dan युग berbagi में teknologi serta टेक्नोलॉजी की peningkatan kapasitas. सप्लाई चेन Teman-teman, रेजिलियंस hari ini बहुत मायने रखती है। ketahanan pasokan क्रिटिकल मिनरल्स teknologi और sangatlah स्टील के penting, क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी dan kesepakatan अहम penting समझौता हुआ juga है। telah
हमारी tandatangani कंपनीज के बीच untuk meningkatkan स्टेनलेस स्टील rantai pasokan और रेयर di अर्थ मैग्नेट को लेकर sektor mineral kritis dan साझेदारी की baja. नई शुरुआत हो Perusahaan-perusahaan रही kita tengah menempuh kemitraan baru di bidang-bidang पीपल टू stainless पीपल steel टाइज dan हमारे logam tanah संबंधों jarang. की सबसे Lalu बड़ी hubungan शक्ति antar masyarakat हमें बहुत खुशी है juga merupakan कि kekuatan terbesar भारत yang kita की miliki. यूपीआई Kami sangat इंडोनेशिया के senang पेमेंट सिस्टम के bahwa साथ Indonesia UPI इंटीग्रेट होने dari जा रही है India akan diintegrasikan इससे dengan ईज ऑफ डूइंग sistem बिजनेस pembayaran di और ईज Indonesia. ऑफ ट्रैवल दोनों Hal को tersebut ही akan बल मिलेगा mendorong Friends, kemudahan berbisnis dan kemudahan राष्ट्रपति प्रभुओं के साथ untuk मुझे traveling. योग्यकार्ता में Dan besok प्रधानन मंदिर saya के कंजर्वेशन akan प्रोजेक्ट को meresmikan लॉन्च करने का bersama dengan सौभाग्य Presiden मिलेगा Prabowo proyek 1000 konservasi वर्ष से भी अधिक पुराना Candi Prambanan प्रधानन di मंदिर Yogyakarta. Candi भारत और tersebut इंडोनेशिया की berusia lebih dari 1000 साझा tahun, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है merupakan simbol dari हम budaya yang दोनों kita देश miliki गुरुदेव bersama, रवींद्रनाथ antara टैगोर की keterkaitan budaya antara Indonesia dan India. ऐतिहासिक Kedua इंडोनेशिया negara यात्रा kita का juga akan शताब्दी merayakan वर्ष dengan धूमधाम sangat से antusias मनाएंगे tentunya. इंडोनेशिया की विकास यात्रा में Guru महान dari शिक्षाविद और यहाँ kunjungan के bersejarah पहले Bernadette शिक्षा मंत्री 1000 tahun lalu ke Indonesia, di mana Ki Hajar Dewantara, शिक्षा को akademisi लेकर hebat dari उनके Indonesia, विचारों पर merupakan Menteri गुरुदेव Pendidikan टैगोर pertama की dari सोच का गहरा Indonesia प्रभाव था yang berkontribusi इसलिए signifikan भारत bagi इंडोनेशिया pembangunan इस शताब्दी di वर्ष को Indonesia, dan pandangannya टैगोर और dari देवांतरा sektor pendidikan Year of memberikan dampak besar Cultural and bagi pemikiran Education global, dan untuk itu kita डिप्लोमेसी के रूप akan में मनाएगा memperingati 100 tahun लोकतांत्रिक Ki मूल्य Hajar Dewantara Year और of विविधता में एकता Educational Diplomacy. भारत Teman-teman और sekalian, इंडोनेशिया की साझी nilai-nilai ताकत demokrasi dan kemajemukan दोनों देशों के telah इलेक्शन कमीशन menjadi के kekuatan बीच bersama dari MOU से Indonesia dan हम India. डेमोक्रेटिक सहयोग को और Melalui MOU yang मजबूत करने ditandatangani जा रहे हैं antara Komisi Pemilihan Umum kedua negara, hari वैश्विक ini मुद्दों पर kita भी akan terus meningkatkan भारत और kerjasama इंडोनेशिया का antara सहयोग kedua demokrasi निरंतर kita, बढ़ रहा है termasuk juga Komisi Pemilihan Umum. इंडो Teman-teman, पैसिफिक के प्रति kerjasama हमारे India dan आउटलुक Indonesia में akan भी terus सिनर्जी meningkat di sektor भारत ने di हमेशा bidang isu global dan juga ASEAN sinergi सेंट्रलिटी dalam को cara विशेष pandang महत्व Indonesia, दिया termasuk juga dalam outlook वैश्विक on उथल पुथल के Indo-Pacific, इस दौर में dan Indonesia menaruh भारत का मानना है perhatian penting terhadap sentralitas और ASEAN, डिप्लोमेसी dan की dalam भूमिका kondisi global yang penuh पहले से gejolak, कहीं अधिक Indonesia, महत्वपूर्ण हो India गई है yakin dialog dan diplomasi Palestine के punya विषय peran पर yang semakin हम penting dari masa-masa two sebelumnya. state solution Dan terkait और isu लॉन्ग टर्म पीस का Palestina, समर्थन करते हैं kami mendukung Friends, two-state एक solution सुनहरा दौर dan हम perdamaian दोनों jangka देशों panjang के yang सामने berkelanjutan. दस्तक दे रहा है Teman-teman, era emas हमारे इतिहास में ada di hadapan kita साझा bersama. संस्कृति है Sejarah kita हमारे वर्तमान में berakar dari साझा budaya yang kita विश्वास miliki है bersama, और हमारे dan भविष्य में kehadiran kita साझा serta rasa समृद्धि है saling percaya मुझे dan भरोसा masa depan kita हम juga akan साथ मिलकर diwarnai dengan kesejahteraan bersama, इंडोनेशिया dan saya एमास yakin kita और bisa विकसित भारत का bersama-sama संकल्प mencapai साकार करें Indonesia emas बहुत बहुत dan धन्यवाद our resolve to build a developed India. Terima kasih.